फ्लावर क्रिएशन आज हम करेंगे। आई एम यूजिंग अल्कोहल इन दिस केस। पेटल की शेप में मैं अल्कोहल को पोर कर लूँगी। किसी भी कलर की इंक यूज़ कर लें आप। आई एम यूजिंग रेड इन माई केस। दिस क्वांटिटी शुड बी generous and then you need to spread it. Once the ink is evenly spread, तो हीट गन से बहुत केयरफुली सर्कुलर मोशन में अल्कोहल और इंक को ड्राई कर रही हूँ मैं। डायरेक्टली हेयर ड्रायर को इंक की तरफ फेसिंग नहीं करनी, अदरवाइज देयर विल बी अ स्प्लैश और इरेगुलर इंक की स्टेनिंग होगी पेपर पे। Now adding alcohol for the second petal. अब मैं इंक का एडिशन करूँगी अल्कोहल के ऊपर। Adding some brown ink as well to give it double color to one of the petal. Using the same procedure, I am giving heat to my petal in circular motion. दोबारा से अल्कोहल का एडिशन करूँगी ताकि तीसरी पेटल को क्रिएट किया जा सके। स्ट्रेचिंग द इंक ऑल ओवर। जितनी बड़ी आपको पेटल क्रिएट करनी है अगेन उतना ही ज़्यादा इसको स्ट्रेच करना होगा। अब मैं हीट गन से सर्कुलर मोशन में दोबारा से अपने अल्कोहल को ड्राई करूँगी। फोर्थ ओवरलैपिंग पेटल एक क्रिएट करूँगी अब मैं। उसके लिए अल्कोहल के बाद आई विल बी एडिंग सम इंक in brown and red color.
इमीडिएटली मैं अपने पैटल को अल्कोहल को ड्राई कर लूँगी यूजिंग दी हेयर ड्रायर। अब मैं मार्कर के साथ इसका स्टेम क्रिएट कर लूँगी। आई एम यूजिंग दी फ्लैट साइड ऑफ माई मार्कर, अल्कोहल मार्कर। फ्लावर को फिनिश करने के लिए अब मैं ब्राउन इंक को यूज़ करूँगी टू फिल दिस एरिया। आई फील लाइक केक पेटल कम है इस एरिया में, तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अनदर पेटल इन दिस एरिया। Moving the hair dryer in circular motion again. Now adding some red ink to it. अनवांटेड एरिया को मैं टिश्यू और अल्कोहल की हेल्प से वाइप कर लूँगी।